Hello students, today we will discuss maximum minimum in two variables. That's a problem. This is u equals to x to the power 3 plus y to the power 3 minus 3ax y. इस क्वेश्चन को लिया हमने कॉलम लिया, इसके लिए डिस्कस करेंगे ये फंक्शन कहाँ मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव. दैट मींस अगर टू वेरिएबल्स है, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव के लिए हम del u upon del x फाइंड करेंगे, del u upon del y फाइंड करेंगे. सो डिफरेंशिएट स्टूडेंट्स, differentiate partially with respect to x and y. This is equation 1 of equation 1. del u upon del x students, जब x के रेस्पेक्ट में फाइंड डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो y कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की q is 3x square. x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y कांस्टेंट इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. माइनस similarly y is also constant, so differentiation of x is 1, so this is simply 3a. And del u upon del y, similarly del u upon del y फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, so x is constant, so derivative of x with respect to y is 0. Next, differentiation of y की q with respect to y, this is simply 3y square minus this is the y, differentiation of y with respect to y is 1, so rest is 3a और x स्टूडेंट्स. सिमिलरली सॉरी यहाँ पे जब हमने x के रिस्पेक्ट में किया है तो y रह जाएगा, x का 1 हुआ. दिस इज फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x and with respect to y. So the necessary condition for a function f(x) or u to be extremum, that means the first partial derivative should be 0 for maximum and minimum, for maxima and minimum del u over del x is equals to 0 होना चाहिए and del u upon del y is equals to 0. It also implies del u upon del x, this is the del u upon del x, और यहाँ से हम क्या कॉमन कर रहे हैं, 3 कॉमन करेंगे. 3 of this is x square minus 3 और 3 कॉमन किया हमने इसमें, यहाँ पर बचेगा a y is equals to 0. Similarly for del u upon del y, this is del u upon del y, 3 कॉमन करेंगे यहाँ से स्टूडेंट्स, this is 3, so this is y square minus 3 common किया हमने हमसे, तो rest is a x is equals to 0. This is equation number second, this is equation number third. Now we solving second and third and we get all the stationary point, that is all the points which satisfying the equation second and equation third. So solving second and third for x and y. हम सेकंड इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू के लिए और y की वैल्यू. लेट अस सी स्टूडेंट्स फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से अगर हम ऐसे फाइंड करें, दिस इज सिंपली x स्क्वायर माइनस a y इज इक्वल्स टू 0. इट आल्सो इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू, y को इधर लेके जाएंगे, a इसकी डिवाइड में आ जाएगा, दिस इज सिंपली x स्क्वायर अपॉन a. इस y की वैल्यू को हम प्लेस करेंगे सेकंड में और आपको क्या मिल जाएगा, x. तो लेट्स देखते हैं स्टूडेंट्स, पुटिंग therefore हम इस y की वैल्यू को रखेंगे जब हम थर्ड में, तो दिस इज y की वैल्यू को रखेंगे स्टूडेंट्स, दिस इज y, so y इज x स्क्वायर अपॉन a. दिस इज सिंपली y की वैल्यू स्क्वायर रख रहे हैं हम, x स्क्वायर अपॉन में a इज होल स्क्वायर स्टूडेंट्स माइनस नेक्स्ट इज a into x is equals to 0. so it also implies एक्सपेंड करेंगे होल स्क्वायर इसका, x टू द पावर 4, यहाँ पे a स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा तो a टू द पावर 3 और x is equals to 0 हो जाएगा. तो it also implies स्टूडेंट्स यहाँ से हम कॉमन करेंगे, x कॉमन करेंगे, so this is x की क्यूब minus a to the power 3 is equals to 0. so it gives x is equals to 0 and x equals to a. इसको 0 प्लेस करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आएगी. अगर हम इस x की क्यूब minus a की क्यूब को 0 करेंगे, it gives only one real value which is x equals to a. इन दोनों वैल्यूज को हम 1 by 1 x की वैल्यू को स्टूडेंट्स इसमें रखेंगे तो हम y फाइंड करेंगे, that is if x is equals to 0, then x equals to 0 को जैसे हम इसमें प्लेस करेंगे स्टूडेंट्स, so y is also equals to 0. if x equals to a अगर हम प्लेस करेंगे स्टूडेंट्स, तो a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, एक a से a कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा स्टूडेंट्स y equals to a, that is points. स्टेशनरी पॉइंट्स टू आया आपके पास, एक x 0 आया आपके पास स्टूडेंट्स, y भी 0 आया, एंड दूसरा पॉइंट आया आपके पास जब x a है तो y भी
A. These are the stationary point. Okay. Next we find RST, that is, therefore differentiate again differentiate partially with respect to x and y. Again ये सब डिफरेंस करेंगे, that means स्टूडेंट्स तो del 2u upon में del x square, that means जो हम डिफरेंशिएशन x u का x के रेस्पेक्ट में कर चुके हैं, अगेन एक बार करना है, so this is 3x square and this is 3ay, so differentiation of y is 0, सिर्फ only differentiation of 3x square is simply 6x हो जाएगा स्टूडेंट्स, and next फाइंड करेंगे del 2u upon में del x del y, that means differentiation of del 2u upon del y with respect to again x, so derivative of del 2 del u upon del x del y is 3y square minus 3ax. हम इसका डिफरेंस x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y कांस्टेंट होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे x है, इसका डिफरेंस 1 हो जाएगा, so that is 3a, so this is simply minus 3a and del 2u upon में del y square is equal, so that means differentiation of u with respect to y again, so this is the del u upon del y, so differentiation again, this is 6y, this is simply 6y. Now all the stationary points we check r, s and t, that is at, हम first check करेंगे इसमें 0, 0. First of all r is del 2u upon में del x square at the point 0, 0. So this is the students del 2 upon del x square, so this is the 6x, इसमें हम x की वैल्यू 0 प्लेस करेंगे, y की वैल्यू प्लेस करेंगे, तो this is completely 0. नेक्स्ट फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स इसी तरीके से s फाइंड करेंगे, s is del 2u upon में del x del y at 0, 0 पे स्टूडेंट्स, so del 2u upon del x del y is simply minus 3a, so it is absence x and y in this case, so this is the value of minus 3a, since it is independent of x and y, ना तो इसमें कोई x है ना इसमें कोई y है, इसलिए minus 3a ही रहेगा, and t is equals to del 2u upon में del y square, del 2u upon del y square फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, and point is 0, 0, so this is the del 2u upon del y square, this is simply 6y, and x is 0, y is 0, on place y is equals to 0, this is equals to 0. These are the all partial derivative of u with respect to x and y. The sufficient condition of a function fx to be extremum, that is rt minus s square should be positive. तो इस केस में हम चेक करेंगे क्या rt minus s square पॉजिटिव है स्टूडेंट्स या नहीं, therefore 1 by 1, therefore rt minus s square, r is simply this is 0 into t is also 0 and minus s is also 0, this is also, so complete rt minus s square is 0. in this case जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है u डाउटफुल केस है, चेक करेंगे फर्दर क्या वो मैक्सिमम मिनिमम होगा कि नहीं होगा, that means in this case the given function should be doubtful. in this case again हम u को पार्शियल डेरिवेटिव्स की हेल्प से डिस्कस करेंगे क्या वो मैक्सिमम मिनिमम फर्दर हो सकता है या नहीं हो सकता है. सिमिलरली स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट आपके पास में है a, इसमें फिर से ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करेंगे, फिर से चेक करेंगे कि rt - s स्क्वायर पॉजिटिव है या नहीं. सो एट अगेन इसमें दूसरा पॉइंट आपके पास है a, इन दिस केस r is equals to again del 2u upon del x square, this is simply 6x, x की वैल्यू a प्लेस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 6a, and s is del 2u upon में del x del y, this is simply minus 3 of a, so it is also independent of x and y, this is simply minus 3a, and t is equals to del 2u upon में del y square, that is which is 6y, and y is a, so this is also 6a. therefore again check करेंगे स्टूडेंट्स हम rt minus s square क्या ये पॉजिटिव है या नहीं है. so as usual 6a, this is 6a of r, and t is also 6a minus s is minus 3a whole square, this is 6 6 are 36 of a square minus this is 9 of a square, इसको माइनस करेंगे इसमें से सिंपली जो भी स्टूडेंट्स वैल्यू आएगी ये की पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, किसी भी a की वैल्यू के लिए ये स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है. सो इन दिस केस द गिवन फंक्शन शुड बी एक्सट्रीमम, या तो वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ये डिपेंड करेगा यहाँ पे. देयरफॉर
since r की वैल्यू जो भी है स्टूडेंट्स वो 6 8 के इक्वल, दिस इज 6 8, r is equals to which is पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू a। अगर a आपका पॉजिटिव होगा तो r की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। सो इन दिस केस u is, जैसे ही r पॉजिटिव होगा वैसे ही उसी कॉरस्पॉन्ड सॉरी a पॉजिटिव है तो r भी पॉजिटिव होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है वो मिनिमम होगा, दिस इज मिनिमम। इफ जैसे ही r की वैल्यू नेगेटिव, a की वैल्यू नेगेटिव होगी r भी नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज a इज नेगेटिव, देन इन दिस केस u इज मैक्सिमम। दैट मींस किसी भी फंक्शन का एक्सट्रीमम होना उस r पे डिपेंड करता है। r अगर आपका नेगेटिव है तो फंक्शन आपका मैक्सिमम होगा, दैट मींस एक्सट्रीमम होगा, एंड अगर आपका r नेगेटिव है तो मैक्सिमम होगा और r आपका पॉजिटिव है तो फंक्शन मिनिमम होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स लेंगे। थैंक यू सो मच।